Hello, good morning. Tamanna, Shelly, Muskan, Ashu, Aman. I hope you all are good. सब बढ़िया है आज टाइम पे आ गया चलो so what we have discussed yesterday a prime minister we have discussed last जो theme हमारा था prime minister था ना we talked about prime minister see I have finished union executive majorly let me move to the state executive and legislature Ajay come today is February. Look at the state executive. The state executive consists governor, right? Then you have council of ministers, and then you have advocate general. अगर हम इसको if we compare with the union executive, right? In union executive we have mentioned president, vice president, council of ministers, and attorney general, right? General. Now, as I told you that in a state there is a parliamentary system of government, right? As similar as the union at at the union level. So if you look at the governor, governor position is as like as the president role. What is the president role? Cherry on the cake, just ceremonial figurehead, right? Now the real power lies with the council of ministers, right? Now if you look at vice president, we have at the union level, but at state level we have no such equivalent post, right? Council of minister, we have council of minister. Now attorney general is a lawyer of the union government. Here advocate general is a lawyer of the state government. Got the idea? Now if you look at in president, as a president is the head of the union executive, right? Governor is also head of the state executive. अगर आप देखोगे कि प्रेसिडेंट के लिए हमने 3 आर्टिकल बनाया था, कौन कौन सा? हाँ, कौन कौन सा था आर्टिकल? 53, 74 और गवर्नर के लिए हम बना लेंगे ऐसे ही कुछ एक आर्टिकल, अब एक ट्रायंगल. आर्टिकल 154, आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164. ठीक है. आर्टिकल 53 में मैंने क्या कहा था? बस आइडेंटिकल है, कुछ भी नहीं. आर्टिकल 53 में क्या है? The executive power of the union government shall be vested in the president, right, who shall exercise such power directly or with the help of subordinate officer in accordance with the constitution. यही है ना? यहाँ पर वही है. The executive power of the state shall be vested in the governor, right, who shall exercise such power directly or with the help of subordinate officer in accordance to the constitution. कोई अंतर नहीं है, right? So look at the governor. Governor is the union, the head of the state executive. Like president is the head of the
यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहा था आर्टिकल 74 में, क्या है आर्टिकल 74? There shall be a council of ministers headed by the chief minister to advise the president who shall act according to such advice. यही है ना, यहाँ पर है there shall be a council of ministers headed by chief minister, right, to advise the governor who shall act according to such advice. ठीक है, यहाँ पर क्या बताया था मैंने? The president appoints the prime minister and other ministers on the advice of the prime minister. यहाँ पर वही है, the governor appoints the chief minister and other ministers on the advice of the chief minister. और क्या बताया था वहां पर आर्टिकल 75 में? Who administer the oath? वहां पर oath की भी बात है. The president administer the oath and affirmation to the ministers. यहाँ पर governor administer the oath and affirmation to the minister. Here the ministers holds office during the pleasure of the president. वहां पर, यहाँ पर governor, कुछ अंतर नहीं है, सब बिल्कुल सेम है, राइट? ठीक है, जो बेसिक्स है मैं बता रहा हूं. अब थोड़ा अंतर क्या है? अंतर ये है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, we have election for the president, but here you don't have election for the president, right? You have governor is appointed by the, who appoints governor? The president of India. ठीक है, यहाँ पर president holds the basically tenure for 5 years. ठीक है, यहाँ पर the governor holds the tenure of 5 years or during the pleasure of the president. ये भी clause है, ठीक है. So there are many similarity between the state executive and the union executive. So just write a bit introductory note to the state executive. Just give title as state executive. Write part 6 and article 153 to article 167. Article 153 to article 167 deals with, ये है 54 होगा, जैसे यहाँ पर 52 से हमारा शुरू होता है और ये कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पर 153 से शुरू होगा और वो कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट. उसको बाद में अमेंड करके ये बोला गया कि देयर कैन बी वन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स. ठीक है, ये है. What I will written part 6 of the constitution and article 153 to article 167 deals with a state executive. Deals with a state executive. Deals with a state executive. The state next point, the state executive consists. The state executive consists governor. The state executive consists governor, council of ministers, and advocate general. And advocate general. And advocate general. ये basic understanding है basically state executive के लिए. Now look at, see the governor, the position of the governor. Right? मैं जैसे आपको बताया कि जो पोजीशन है गवर्नर का वही पोजीशन है जो प्रेसिडेंट का पोजीशन है यूनियन गवर्नमेंट. The position of the state government, the position of the governor in the state government is as same as the position of the president in the union government. कुछ अंतर नहीं है, right? मैं जैसे मैंने कहा आपको क्या कि president heads the union executive, governor heads the, तो right governor. थोड़ा गवर्नर के बारे में कुछ लिखिए जरा.
Article 153, Article 153 to Article 160. Article 153 to Article 160 deals with governor. Deals with governor. Article 153 says that, right, one by one. Article 153 says that, Article 153 says that there shall be a governor for each state. Article 153 says that there shall be a governor for each state. Okay? However, the seventh amendment, the seventh CAA provided that the seventh CAA, seventh Constitutional Amendment Act, provided that one person can be governor. One person can be governor for two or more states. One person can be governor for two or more states. Making sense? Right. Next point you write, okay, the position of the governor in a state polity, the position of governor in a state polity, the position of governor in a state polity is as similar as, the position of governor in a state polity is as similar as the position of the president, the position of the president at union level. At union level. Making sense, right? अब ये जो ट्रायंगल मैंने वहां पर भी प्रेसिडेंट पढ़ाया था, तो ये ट्रायंगल आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? अब ये ट्रायंगल आपको फटाफट लिख लेना है. आर्टिकल 154 ना, या 154, यस यस, ये होता है 163. हाँ, ये है 164, यस, राइट. आर्टिकल 154 ये हमारा है इधर. आर्टिकल 150 ओनली 53, 74 and 75. Yes, you remember. Just remember. Article 154 says that the executive power of the state shall be vested in the governor. The executive power of the state shall be vested in the governor. The executive power of the state shall be vested in governor. The executive power of the state shall be vested in governor, who shall exercise such power directly or with the help of subordinate officer, or with the help of subordinate officer, in accordance with constitution. देखो यहाँ पर कुछ भी बदला है? कुछ भी नहीं बदला है मैंने. प्रेसिडेंट को बस आर्टिकल बदल दिया है, प्रेसिडेंट बदल दिया, गवर्नर बदल दिया, सेम वर्डोलॉजी है, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, देखिए आर्टिकल 163. Article 163 says that
Article 163 says that there shall be a council of minister. There shall be a council of minister. There shall be a council of minister. There shall be a council of minister headed by chief minister. Headed by chief minister to aid and advise the governor. To aid and advise the governor, who shall exercise power according to such advice. Who shall exercise such power according to power according to, okay, except यहाँ पर except discretionary power. Except discretionary power. यहाँ बस ये ऐड हो गया है, except discretionary power. कुछ पावर है जो उनको दिया गया है, that is called discretionary power, right? और तीन तरह की डिस्क्रिशनरी है, बाद में बताऊंगा. वो एक है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिशन दिया है. एक है सिचुएशनल, जो प्रेसिडेंट के पास भी है. और एक वो है स्पेशल, इन रिलेशन टू द डिफरेंट स्टेट्स, राइट? बट विल डील लेटर. नाउ राइट आर्टिकल 164. Article 164 says that Article 164 says that the governor shall appoint chief minister. The governor shall appoint chief minister and other ministers on the advice of the chief minister. On the advice of the chief minister. ठीक है, राइट? और सारे प्रोविजन जो भी है, और भी लिखवाऊं क्या? लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. The ministers hold office during the pleasure of the governor. During the pleasure of the governor. Right. Next, the governor administers oath and affirmation to minister. The governor administers the oath and affirmation to ministers. What the idea? Next point, right? The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly. The Council of Ministers shall be collectively responsible. The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly. To the Legislative Assembly. Right? One more point you write. Total strength of the Council of Ministers. The total strength of the Council of Ministers. The total strength of the Council of Ministers
The total strength of the Council of Ministers shall not exceed कितना percent? 15%. Yeah, 15% of the total strength. 15% of the total strength of the state assembly. Of the state assembly. Of the state assembly. समझ में आया? राइट? अच्छा, ये प्रोविजन कब जोड़ा गया था? ये जो टोटल 15, मैंने उसमें शायद मैंने बाद में याद किया कि मैं भूल गया, आपको बताया नहीं था। ये जो प्रोविजन है ना, टोटल मैंने बताया था क्लास में, टोटल स्ट्रेंथ शुड बी 15% व्हेन इट वाज डन। कब किया गया था ये? हाँ, कोलिजन गवर्नमेंट मैंने बताया था, कोलिजन व्हेन देयर इज एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। Basically, this provision was inserted by the 91st Constitutional Amendment Act 2003. लिखिए, this provision was inserted by the 91st Constitutional Amendment Act 2003. अच्छा, स्टेट जैसे यूनियन लेवल पे है ना, a person can be a minister, right, for the 6 consecutive months, right, without being member of the house. वो वहां पर भी है, right? Governor can appoint any person as a minister being without member, but that member has to take the membership within 6 months, otherwise that person would ceases to member of the house. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो मौर्य साहब, मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, right? He lost election, but he became the minister, right? But within 6 months he had taken the membership. Look at Chief Minister of West Bengal. She lost election. Do you know? She lost election, right? Mamata Banerjee, but she became the Chief Minister. And if you look at the state level, it's not that all state has 2 houses, no, right? Only we have 6 states which are bicameral. Otherwise 22 states are unicameral. ठीक है, जो बाइकैमरल है वो नॉर्थ इंडिया में कम है, साउथ इंडिया में ज्यादा है, अगर नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर लो इंडिया को तो, राइट? जैसे यूपी बिहार यू हैव बाइकैमरल। नाउ लुक एट, गो टू द महाराष्ट्र से नीचे चले जाओ, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, ठीक है, और तेलंगाना, ये भी 2 हाउस है। जम्मू कश्मीर में था, एबोलिश हो गया वो, तो उनको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, ठीक है, वो भी इसी आर्टिकल का पार्ट है। जो आर्टिकल यहां पर है वो आर्टिकल यहां, मतलब एग्जैक्टली सेम क्लॉज है, राइट? देयर इज नो डिफरेंस, राइट? अच्छा, सैलरी अलाउंसेस मिनिस्टर को कैसे मिलता है? मैंने बताया हुआ है, हाउ मिनिस्टर्स गेट सैलरी एंड अलाउंसेस, यहां पर बताया हुआ है, पार्लियामेंट, it is fixed by the parliament from time to time, and where it is mentioned salary, second schedule it is mentioned, it is like वहां पर भी यही है, right? Salary allowances, right, are fixed by the state assembly from time to time. Recently Odisha assembly has fixed the salary for MLA, member of the legislative assembly in Odisha. कितना? 3,50,000, right? Aam Aadmi Party had increased the salary of MLA to 4 lakhs. आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी कर लिया है। यही एक संस्था है जो अपनी सैलरी खुद बनाती है, अदरवाइज ये दूसरों की भी सैलरी फिक्स करती है। तो जब कोई दूसरों को भी सैलरी फिक्स करता है, अपना भी कर सकते हो, पहले अपना सेटल कर लो। एनीवे,
ये मैंने बताया हुआ है, जस्ट रीड, इसको अच्छे से पढ़िएगा, देन इसको भी पढ़िएगा, राइट, इसको छोड़ना नहीं है, राइट, बैराक से जाना है इस आर्टिकल में। गो अहेड। हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, यस यस बोलो, पूछो। Salary is fixed by the parliament. Yeah. So, how it is decided by the state government or a particular party with the salary of the MLA or MP? See, salary is fixed by the state assembly by the law. एक law बना दिया, right? Salary and Allowances Act 2023, मान लो 2023 में पास हो गया। अब उस वो लॉ कहता है कि वन एमएलए विल गेट दिस मच ऑफ अमाउंट। नाउ उनकी जो सैलरी आती है ना, वो उस हिसाब से आएगी। गॉट आइडिया? ठीक है, ये होता है क्या? उसको हर पार्टी अपना सैलरी डिसाइड कर देती है। आम आदमी पार्टी passed a law because Aam Aadmi Party had majority in Delhi Assembly, right? They decided salary for the MLA. अभी जो बीजेपी का एमएलए है दिल्ली असेंबली में, वो सेम सैलरी पा रही है, राइट? और आप ये यहाँ की नहीं, महाराष्ट्र की भी वही हाल है, उड़ीसा की भी, हर जगह, राइट? इट इज सैलरी इज फिक्स बाय द पार्लियामेंट, राइट? जो भी मैंने आपको बताया है, एक की सैलरी है जो पार्लियामेंट फिक्स नहीं करती है, वो करता है प्रेसिडेंट, वो है अटॉर्नी जनरल, और एडवोकेट जनरल को करता है गवर्नर। अदरवाइज मोस्ट जो सैलरी एंड अलाउंसेस है, इट इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। कैन रिपीट द लास्ट पॉइंट? MLC, it's a government. MLC के लिए भी, उनके लिए भी, MLA के लिए भी, और MLC के लिए, दो बोथ आर मेंबर्स, और दोनों की सैलरी इक्वल है, दोनों की सैलरी इक्वल है, एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। यस सर, लास्ट पॉइंट, मैंने लास्ट पॉइंट क्या बताया था, जरा रिपीट करना। The total strength of the council of minister should not exceed 15% of the total strength of the legislative assembly. This provision was inserted by 91st Constitutional Amendment Act 2000. अमन, और ये मैंने कहा था सैलरी एंड अलाउंसेस, ऑलरेडी आई हैव डिक्टेटेड हियर, राइट? यहाँ पर हम थोड़ा स्किप करते हैं। नाउ एक चीज मैंने आपको थोड़ा बताया, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि गवर्नर आर्टिकल कितना से 152 से 160 तक, यानी कि 160, 152 to 160, इट टॉक अबाउट गवर्नर पोजीशन, governors, basically how governor is appointed. वन फिफ्टी थ्री या फिर 153, 152 है स्टेट के बारे में, 153, थैंक यू, वहां पर 52 है, 153, राइट? नाउ राइट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। Okay, the president appoints governor. The president appoints governor by warrant under his hand and seal. By warrant under his hand and seal. सिग्नेचर होता है, मोहर होती है, वही by warrant under his hand and seal. By warrant under his hand and seal.
देखिए, he is the nominee of the central government. He is the nominee of the central government. He is the nominee of the central government in the state polity. In the state polity. In the state polity. अच्छा, बात ये भी चल रही थी कि क्यों ना गवर्नर का इलेक्शन ही हो जाए, राइट? ठीक है, तो फिर बाद में ये बहुत डिस्कशन हुआ था कि भाई इलेक्शन करके करोगे क्या? When you know adopting parliamentary form of government in a state also, so if you elect governor but not giving power to the governor, then it will be contradictory, right? For example, if you elect the governor, then governor will be the popular authority now, right? So since we are actually opting parliamentary system at a state level, therefore we don't need to elect governor, we need to appoint governor. So basically the governor is appointed, unlike the president. President is a indirectly elected, but governor is appointed. Now write tenure of the governor. Tenure. क्या बोला आपने? It is not mentioned. It is a Sarkaria Commission recommendation. I'll come. Right? Governor is one of the most contested political office in Indian polity. ऐसा मेंशन नहीं है, सर कमीशन ने इसको बोला, ठीक है? बहुत सारे कमीशन, जैसे टेनियर की बात करेंगे अभी, यहाँ पर एक टेनियर है विल ऑफ द प्लेजर, और वो पहले है, तो फिर राइट बहुत एक कमीशन ने कहा कि ये जो हटा दो इस क्लॉज को, राइट? आप देखेंगे कि राजा मन्नार कमेटी है या बहुत सारे कमेटी बोला गवर्नर को ही हटा दो, जरूरत ही नहीं है, right? We have adopted very much centralized federalism now, right? Tenure of the governor. Okay, the governor holds office during the pleasure of the president. Governors hold office during the pleasure of the president. Governor holds office during the pleasure of the president. Governor holds office during the pleasure of the president. Okay. However, Constitution also mentioned that. However, Constitution also mentioned that. However, the Constitution also mentioned that the governor shall hold office. The governor shall hold office for a term of 5 years. The governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. कितना है? 5 साल है, ठीक है? ये भी मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन. अब मैं आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं गवर्नर को लेकर के, राइट? गवर्नर हो गया सेंट्रल. अगर आप देखेंगे, लेट मी गिव यू एग्जांपल. इफ यू सी इंडियन पॉलिटिक्स 1952 1967, the role of governor was not so prominent in state politics, right? But after 67 it became so prominent. Why is it so? As I mentioned while teaching parliament, in 1967 the Congress lost power in 7 states, right? 7 states बोला था, बताया था कौन कौन सा स्टेट था. साउथ से लेना है
केरला एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु में डीएमके था, केरला में लेफ्ट पार्टी थी। ठीक है, अब सीधा आ जाओ इधर नॉर्थ, आंध्रा भी, राइट। आ जाओ नॉर्थ, नॉर्थ में है हरियाणा, पंजाब। पंजाब में अकाली दल, राइट। हरियाणा में it was a coalition government called संयुक्त विधायक दल, राइट। देन हरियाणा पंजाब हो गया, यूपी एंड बिहार। यूपी बिहार में भी हार गया ये। कितना हो गया? 3, 2, 5, 7 हो गया। वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 9 हो गया ना। 9 स्टेट्स में हारा था ये, राइट। इन 9 स्टेट्स बेसिकली कांग्रेस लॉस्ट पावर। अब यहां पर गवर्नर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर टू टेम द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द स्टेट। वो तो फिर दूसरी बात है। नाउ इन 1977 इफ यू लुक एट, जनता पार्टी केम टू पावर, राइट। अब जनता पार्टी जब पावर में आई तो इन्होंने कुछ साल 2 साल रूल किया 1979 तक। और इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे गवर्नर का टेन्योर पूरे हो चुके थे, उन्होंने अपने गवर्नर लगा दिए। बट इट ऑल्सो रिमूव्ड 9 गवर्नर्स। ठीक है, इट रिमूव्ड 9 गवर्नर्स those who are appointed by the Congress party, right, before completing 5-year tenure. Why they have been removed? Because it is written in the constitution the governors shall hold office during the pleasure of the president, right. आपको पता है कि 1980 में कौन आ गई? फिर से इंदिरा गांधी आ गई। ठीक है, अब जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बेसिकली अपॉइंटेड देयर ओन गवर्नर। बट वो जो गवर्नर 9 गवर्नर बदल दिए गए थे, राइट। इंदिरा गांधी, व्हाट इंदिरा गांधी डिड, शी चेंज द 9 गवर्नर appointed by the Janata Party government. Now then thereafter if you look at it, became rule, it become very much norm that governor holds office during the pleasure of the not president, pleasure of the central government, right. उनकी आइडियोलॉजी से हाँ जी मिलाओ तो ही you see the governor, right. And और होने क्या लगा कि गवर्नर, the older member of the party used to be appointed as a governor. अभी भी हो रहा है, right. And from that states only. Now later on case went to the court, right. And the question was asked in the court, do you think or do we think that governor is a constitutional position, right. If it is a constitutional position, then should it complete 5-year tenure, or is it really hold office during the pleasure of the president? And what does it mean by the term pleasure, right? Pleasure means pleasure of the central government, the ideology of the central government. Now look at here, there have been several judgment. One judgment came in 1979, that is called, so judgment name is Hargovind Pant Dr. versus Dr. Raghukul Tilak. Now in this judgment, Supreme Court held that the office of governor is not an employment. The office of governor is not an employment under the central government. Okay? It is a constitutional position. It is an independent constitutional position. Now the strict position has been taken by the Supreme Court in BP Singhal case 2010, right. अब इसमें बीपी सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, not an employee, right, or not an agent of the union government. ठीक है, the governor cannot be removed on the ground that he is not, right, or he is out of sync with the policies or ideology of the union government, right. Then change in the government at the center does not mean changes in the position of the governor. Changes in the central government does not mean changes in the governor. Meanwhile, if you look at, there have been many commission and committee, right. They have also talked about the office of the governor. For example, our Sarkaria committee, right, which recommended that the governor should be from outside.
And whenever the governor should be appointed, the president, the central government must ask the chief minister. उनको पूछ लीजिए कि मैं ये गवर्नर, राइट, ये रिकमेंडेशन था, ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट पुंची कमिटी, MM पुंची, मदन मोहन पुंची, राइट, दैट वाज अपॉइंटेड इन 2007. उसने कहा कि ये जो क्लॉज है ना, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. However, it is not deleted. It is mentioned in the Indian Constitution. Got the idea? ये सारी इतनी स्टोरी है, तो थोड़ा सा ये स्टोरी को हमें क्या लिखना है. What have you written? Tenure of the 5 year, 10 year हो गया ना, 5 year. देखिए, the office, the tenure of the governor is contested. The tenure of the governor is contested due to the phrase pleasure of the president. Due to the phrase pleasure of the president. Due to the due to the phrase pleasure of the president. Pleasure of the president को inverted comma में लिखिए इसको जरा. In 1977, Janata Party government removed Janata Party removed 9 governors. In 1977, Janata Party removed 9 governors because they were appointed by the Congress government. Because they were appointed by the Congress government. Next point, in 1980, Congress government came to power. And it removed 9 governors. It removed 9 governors appointed by the Janata Party government. By Janata Party government. What idea? Okay. Question was raised whether the governor office is an employment. Question is raised whether the governor office is an employment. Question was raised whether the office of the governor office is an employment under the union government. Employment under the union government, or a constitutional position. And not subordinate to the central government. And not subordinate to the central government. And not subordinate to the central government. Okay? Now, next point you write, okay. The Supreme Court in Hargobind Pant. The Supreme Court in Hargobind Pant versus Dr. Raghukul Tilak.
अब मैंने कहानी आपको यहां से बताया, बट इट कैरीड आउट बाय द सक्सेसिव गवर्नमेंट। बीपी सिंह गवर्नमेंट ने आया तो वो भी वही किया, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने आई तो फिर वही किया, फिर नेक्स्ट वाजपेयी गवर्नमेंट आए तो भी वही किए। समझ में आया? ये चीज सिलसिला चलता रहा, राइट? अब रुका है, but because of the Supreme Court, because of the Supreme Court intervention. What have you written? Supreme Court in Hargobind Pant versus Dr. Raghukul Tillak held that held that held that the office of governor is not an employment. The office of governor is not an employment under the central government. Right? It is an independent constitutional office. It is an independent constitutional office. It is an independent and constitutional office and not subordinate to the central government. And not subordinate to the central government. And not subordinate to the central government. Right? एक और जजमेंट लिखना है यहाँ पर. देखिए, the Supreme Court in BP Singhal case 2010. Supreme Court in BP Singhal case 2010 held the following. Held the followings. अब जरा ABCD करके लिखिए 3 पॉइंट. First, the governor is a constitutional head of the state. Governor is the constitutional head of the state. Governor is the constitutional head of the state. He is not an employee or agent. Governor is a constitutional head of the state. He is not employee or an agent of the union government. He is not an employee or agent of the union government, nor a part of any political team, nor a part of political team, nor a part of political team. Second point, next point, the governor cannot be removed. The governor cannot be removed on the ground that the governor cannot be removed on the ground that his ideology is different. His ideology is different. The governor cannot be removed on the basis that, on the ground that his ideology is different from the ideology of party in power at the center. Different from the ideology of a party in power at the center. समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल्ड डाउन दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर कैसा कुछ डिस्प्यूट आता है, सवाल आते हैं, यू कैन यूज इट. थर्ड, वन मोर,
BP single case, though suggested. The change in central government at the center, the change of government at the center the change of government at the center cannot be the ground for removal of the governor. The change of government at the center cannot be ground for the removal of the governor. So this is basically regarding 10 years debate. अच्छा, अगर गवर्नर को रिजाइन करना हो तो किसको देगा गवर्नर? प्रेसिडेंट को. One more point you write, just very much different from them. Okay, the governor can resign early from the office. The governor can resign from the office early by submitting a resignation letter to the president. बट मान लो कि 5 साल पूरा हो गया और गवर्नर ने प्रेसिडेंट ने अभी तक गवर्नर अपॉइंट नहीं किए. कैन गवर्नर कंटिन्यू बियॉन्ड द 5-year tenure? Yes, you write it. Okay, the governor can continue in office beyond 5-year tenure. Governor can continue in his office beyond 5 years until his successor enters upon his office. Until his successor enters upon his office. तो वो रह सकते हैं. ठीक है? So this is about 10 years remaining in the office. ठीक है? Now let me talk about the qualification. What should be the qualification for governor? देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, एज कितना है? एज है 35 years and above. ठीक है, देखो क्वालिफिकेशन इतना ही है, बट कुछ कंडीशंस है गवर्नर्स के ऑफिस के लिए, उसको भी इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं. देखिए, थर्ड, should not hold office of profit. Should not hold office of profit. Right? अब लिखिए इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस. इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस जैसे हमने प्रेसिडेंट में किया था. इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस. अब इनको क्या क्या इम्यूनिटी मिलता है? क्रिमिनल इम्यूनिटी. राइट, क्रिमिनल इम्यूनिटी.
तो हम लाइक आई थिंक थोड़ा टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं. आर्टिकल 14 में भी बताया था, प्रेसिडेंट के टाइम पे भी, यहाँ पर भी. देखिए, like the president, the governor enjoys criminal immunity. Like the president, the governor enjoys criminal immunity. The governor enjoys criminal immunity. It means no criminal proceedings can be initiated. It means no criminal proceedings can be initiated. It means no criminal proceedings can be initiated against the governor while he is in office. While he is in office. ठीक है. देन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिविल इम्यूनिटीज के बारे में लिखिए. तो सिविल इम्यूनिटी, civil proceedings can be initiated against governor. Civil proceedings can be initiated against governor. Civil proceedings can be initiated against governor after giving, कितना दिन का नोटिस देना पड़ता है? After giving 60 days advance notice. तो सिविल प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब है? घर में तलाक चल रही हो, प्रॉपर्टी का मामला चल रहा हो, दैट इज सिविल प्रोसीडिंग्स. 60 days. After giving for 60 days advance notice. ठीक है. अब लिखिए सैलरी एंड अलाउंसेस. सैलरी एंड अलाउंसेस. देखिए, द गवर्नर शैल गेट salary and allowances. The governor shall get salary and allowances. The governor shall get salary and allowances as determined by the parliament. As determined by the parliament by law. As determined by the parliament by law. Right? And such salary and allowances shall be specified in the second schedule. अच्छा, ये पैसा तो कौन डिसाइड कर रहा है? ये पार्लियामेंट डिसाइड कर देगा. कौन है? स्टेट गवर्नमेंट देगी या सेंट्रल गवर्नमेंट देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी. इट इज पेबल, पेएबल बाय, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. देखिए, द सैलरी इट इज पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. इट इज पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. फिक्स कर दिए पार्लियामेंट, देती है स्टेट गवर्नमेंट. अब लोचा ये भी है कि मान लो कि एक गवर्नर, एक स्टेट का गवर्नर नहीं है, दो स्टेट का गवर्नर है, तीन स्टेट का गवर्नर है. अब इस हाल में कौन स्टेट कितना देगा? Who will determine? तीनों देगा, बट ये डिसाइड कितना देगा? आधा आधा आधा. तो 3 सैलरी लेगा गवर्नर? नो,
No person can take two salary, right? Two role you can perform. Two role you can perform. Allowances मिलेगा, salary नहीं मिलेगी. Otherwise allowances जो privileges है वो सब मिलेगी, right? But salary नहीं मिलेगी. Salary तो एक टाइम मिलता है, right? तो इस केस में the president has power to determine which state will allocate what amount of money. ठीक है? लिखिए, if a person नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं. मान लो कि कोई बड़ा स्टेट है, कोई छोटा स्टेट है, महाराष्ट्र एंड गोवा. महाराष्ट्र के पास कितना पैसा है, राइट? गोवा छोटा स्टेट है ना? ठीक है, तो फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है. ठीक है, इफ अ पर्सन इज अ गवर्नर, if a person is a governor of two or more states, then then salary and allowances payable to the governor salary and allowances payable to the governor shall be allocated among states, as determined by the President of India. As determined by the President of India. ठीक है, तो ये इनका सैलरी हो गया. एक चीज और है, सैलरी कम नहीं हो सकती किसी भी ऑफिस का, ये दिमाग में रखना. सैलरी कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर, राइट? लिखिए, the salary and allowances of governor shall not be diminished. The salary and allowances, अच्छा, सैलरी का दूसरा टर्म है emoluments, वो भी टर्म यूज लिखा हुआ रह सकता है, राइट? emoluments लिख लो. emoluments and allowances of the governor shall not be diminished. emolument and allowances, emolument मतलब सैलरी. दूसरा टर्म भी यूज होता है remuneration, अलग अलग टर्म होते हैं. emolument and allowances of governor shall not be diminished. Emolument and allowances of the governor shall not be diminished during his term of office. His term of office. His term of office. अब ये हो गया, राइट? ओथ एंड अफर्मेशन दिलवा दीजिए इनको. ओथ एंड अफर्मेशन, राइट? ओथ एंड अफर्मेशन. हु एडमिनिस्टर ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर? कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और द सीनियर मोस्ट जज. ओथ एंड अफर्मेशन लिखिए, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और द सीनियर मोस्ट जजेज. The Chief Justice of the High Court or senior most judges in absence of the Chief Justice. In absence of the Chief Justice, shall administer oath and affirmation. Oath and affirmation to the governor.
to the governor. To the governor. Got the idea? So that is now सब कुछ हो गया. Yeah. Now let me talk about the break. हाँ, पक्का break. Now let's go for break for 10 minutes. At 11 we will begin. ठीक है. चलो.
Hello, am I audible? Tamanna, Shelly, Sanskriti, Muskan. Yeah. So let me resume. I have to, इसको खत्म करना है आज. या ये बताओ हमने क्या किया अभी तक. गवर्नर का सारा अपॉइंटमेंट हो गया, रिमूवल हो गया, कैसे रिमूव होता है. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द टेन्योर, वी टॉक्ड अबाउट what salary and allowances, immunities, qualification, सारा कुछ हो गया. Now I'll talk about the powers and functions of the governor. And here if you look at it, it is same as we have done in the for the president. क्या किया था हमने? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऐसे किया था ना. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या क्या किया था उसी को रिपीट कर देना है. बस चीफ मिनिस्टर रखना है, यहाँ पर गवर्नर वहां पर रखना है. यहाँ पर चीफ मिनिस्टर गवर्नर रखना है, वहां पर क्या था हमारा प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पर हमने लेजिस्लेटिव पावर किया था. फिर हमने क्या किया था फाइनेंशियल पावर. फिर हमने क्या किया था जुडिशियल पावर, पावर ऑफ पार्डन, पार्डनिंग पावर दैट वी हैव डिस्कस्ड. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक पावर इनके पास होता नहीं है. उसके बाद क्या इमरजेंसी में इनके पास ये रिकमेंड करने का होता है. यस, बट उसको हम ना डिस्क्रिशनरी पावर में पढ़ेंगे, उसको हम इमरजेंसी पावर में नहीं पढ़ेंगे. राइट, ही हैज सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर. Now I'll skip legislative, administrative, financial, and judicial power. Right. I'll move to the discretionary power. यहाँ पर आपको करना क्या है, you have to write here. जो भी आपने वहां पर लिखा है, वहां पर हमने प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बताया था, यहाँ पर हमने गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर कर लेना है. Right. We have also talked about in the class. President appoints the governor appoints chief minister and other minister with the advice of the right. वो है legislative power में क्या क्या है. What is legislative power? Like president addresses the house in each new parliament. Governor also does the same. Right, before each session begin in the one new financial year, the president addresses the house. Governor does the same. ठीक है. बट गवर्नर कुछ गवर्नर करते भी हैं कि एड्रेस पढ़ते ही नहीं है या एस्केप कर देते हैं. यू हैव सीन द रिसेंटली द कर्नाटका, राइट, केरला एंड तमिलनाडु गवर्नर that will do the role of the state, right, role of a governor in the state politics. ठीक है. जुडिशियल पावर में क्या है, पार्डनिंग पावर. अच्छा, फाइनेंशियल पावर में क्या है, मनी बिल. Money bill is introduced in the state assembly after prior approval of the governor. अच्छा, जैसे यूनियन गवर्नमेंट का फाइनेंस बजट होता है वैसे स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट होता है ना. सो उसका जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टेट का, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर. ठीक है. नो डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी, नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी accepted except the recommendation made by the governor. Governor will recommend the DG, demand for grants. ठीक है. तो ये फाइनेंशियल पावर में है, that you do your. ठीक है. वहां से बस कॉपी करना है, प्रेसिडेंट को हटा करके गवर्नर रख देना है. राइट. Now let me talk about discretionary power, which is different. Now if you see discretionary power, president, as I told you that president has only
situational discretionary power. But if you look at governors discretionary power. Now, governor has three kinds of discretionary power. One is called constitutional discretion. राइट, अब कॉन्स्टिट्यूशनल में डिस्क्रिशनरी में क्या है, जब आप इमरजेंसी बता रहे थे ना, तो ये है कि भाई द गवर्नर कैन रिकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज आर्टिकल 356. दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन. वो किसी से पूछेगा नहीं, वो चीफ मिनिस्टर नहीं पूछेगा कि मैं गवर्नर रूल्स लगाऊं क्या यहां पर, नहीं पूछेगा. गॉट द आइडिया. दूसरी बात, आपको मैंने बताया था कि गवर्नर क्या करता है, जब बिल पास होता है दोनों हाउस से और उस गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर हैज 4 ऑप्शंस और 5 ऑप्शंस, राइट. ठीक है. अब एक ऑप्शन है कि द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल, राइट, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. वो चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछेगा. दिस ऑल आर बेसिकली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन टू द गवर्नर. समझ में आया? जरा लिखिए तो, और एक लाइन पहले लिख लेना है. क्या लास्ट स्लाइड. ओके, इसको जस्ट, हाँ, इसको बना लीजिए. ये एटलीस्ट फिगर तो बना लीजिए और घर पे काम करिए इसको लेकर के. राइट. हेल्प लेना है तो थोड़ा सा लक्ष्मीकांत का हेल्प ले सकते हैं आप वहां पर, बट उसको छोड़ना नहीं है कि हाँ ठीक ठीक है जी, सेम ही है, सर ने बता दिया है, यूनियन वाला पढ़ लेना है, स्टेट वाले को नहीं पढ़ना है. ऐसा नहीं करना है. जस्ट रीड एंड यू राइट. ठीक है, सेम ही सेम है, बट फिर भी पढ़ना है उसको. जस्ट नोट इट डाउन. गवर्नर, हाँ, गवर्नर हैज ऑर्डिनेंस पावर, बताया मैंने. गवर्नर 161 आर्टिकल 169 213. प्रेसिडेंट के पास है ऑर्डिनेंस पावर 1 2 3. गवर्नर के पास है कौन सा? 213. ये ऑर्डिनेंस पावर है. सेम सेम, कुछ एक शब्द भी बदलना नहीं है. ठीक है. उसके पास भी जो ये पार्डनिंग पावर है, उसके भी पार्डनिंग पावर में थोड़ा डिफरेंस है, बट इसमें नहीं है, ऑर्डिनेंस में नहीं है. तो करना आज घर पे. एंड इफ यू फाइंड एनी डिफरेंसेस, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, जस्ट आस्क टुमारो. जस्ट राइट अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर. लिखिए. While the President of India has only limited discretion, while the President of India has only limited discretionary power, comma, the governor has broader discretionary power. The governor has broader discretionary power in the state polity. In the state polity. Stop. The president has only situational discretion. The president has only situational discretion, whereas governor possesses 3 types of discretionary power. Whereas governors possess 3 types of discretionary power.
First, you write constitutional discretion. Constitutional discretion. Constitutional discretion. अच्छा, डिस्क्रिशनरी पावर मतलब क्या है? डिस्क्रिशन का क्या मतलब है? हाँ, वो पूछेगा नहीं किसी से, वो अपने मन से करेगा, राइट? देखिए, द गवर्नर हैज फॉलोइंग डिस्क्रिशनरी पावर. द गवर्नर हैज फॉलोइंग डिस्क्रिशनरी पावर as per the constitution. The governor has following discretionary power as per the constitution. As per the constitution. अब इसमें ABCD करके लिख लीजिए. मैं आर्टिकल भी लिखवा देता हूं. लिखिए, आर्टिकल 201 empowers the 201 नहीं 200. Article 200 empowers the governor. Article 200 empowers the governor to reserve the bill. To reserve the bill for the consideration of the president. For the consideration of the president. For the consideration of the president. और है वीटो पावर जो मैंने बताया आपको, वो इनके पास भी है. किसके पास है? गवर्नर के पास भी है. ये हो गया आर्टिकल 200. फाइन. अब लिखे आर्टिकल 356 empowers the governor. Article 356 empowers the governor to recommend. To recommend. Article 356 empowers the governor to recommend for president role in the state. In the state. ठीक है. अब ये हो गया. अब तीसरा है कि मान लो कि एक गवर्नर है ऑफ स्टेट, अब बट वो इसका मान लो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी है किसी भी तीसरे, मान लो यूटी है हमारा चंडीगढ़, उनका भी एडमिनिस्ट्रेटर है, राइट? तो फिर उसके केस में वो डिसीजन ले लेता है, राइट? द गवर्नर कैन टेक डिसीजन इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द यूनियन टेरिटरी. राइट इट. देखिए, द गवर्नर कैन टेक डिसीजन. The governor can take decision. The governor can take decision while he has additional charges. He has additional charges of UTs. Of UTs. ठीक है, राइट? Next, the governor can decide. Next point, the governor can decide whether the union law shall be applicable. The union law shall be applicable in the 5th schedule areas or not. In the 5th schedule area or not. Fifth schedule areas or not. Right. So these are the basically constitutional discretion given to the governor. Now come to the second one, situational discretion. Situational
डिस्क्रिशन। अब मैं आपको प्रेसिडेंट का सिचुएशनल डिस्क्रिशन नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया था क्योंकि जब हम लोग गवर्नर की बात करेंगे तभी हम लोग बात कर लेंगे। As I told you that president has no explicit discretionary power given by the constitution. आपने कहा कि भाई पॉकेट वीटो है सर, राइट? वेदर पॉकेट, यस, पॉकेट वीटो को कह सकते हैं कि पॉकेट वीटो है, क्योंकि पॉकेट वीटो में वो पूछेंगे नहीं फिर, राइट? बट पॉकेट वीटो का यूज बहुत कम हुआ है, राइट? तो अगर हम पॉकेट वीटो को कह देंगे तो ठीक है पॉकेट वीटो, अदरवाइज प्रेसिडेंट हैज नो पावर। सिचुएशनल डिस्क्रिशन क्या होता है? मान लीजिए व्हेन देयर इज अ हंग पार्लियामेंट, hung parliament, right? And what is hung parliament? When no party has full majority in the Lok Sabha, then it is called hung parliament, ठीक है? और दूसरा नाम है fractured mandate, जो वर्ड जो होता है कि मैंडेट फुल नहीं है, फ्रैक्चर्ड है। उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा? किसको अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर, राइट? टू हुम? हाँ, इसमें भी आप ऐसा नहीं कि किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देगा कि भाई किसी को नहीं आया चलो मेरा भतीजा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। That cannot be the possible, right? What prime minister will does, the president will does basically president will invite to a leader of the largest party or the leader of the largest alliance, ठीक है? लार्जेस्ट अलायंस ये करेंगे वो। बट मान लो कि वो फिर वो दैट पर्सन इज नॉट एबल टू प्रूव द मेजॉरिटी, देन इफ सिचुएशन अराइजेस, राइट, दैट certain person has probability to prove the majority, then in such case that president can invite the other person to come and prove the majority. Let me give you example. Have you heard about Neelam Sanjeeva Reddy? सुना है इनके बारे में? He was a president while Janata Party was in power, right? He invited Morarji Desai. Morarji Desai was a prime minister of India, right, in Janata Party. When Morarji Desai resigned because of the less majority. Now he invited Chandrasekhar, right? Chandrasekhar to take the position. Chandrasekhar actually, took the oath to the office of the prime minister, but could not survive because of the lack of majority in the house, right? Then he had, opportunity to invite Meera Kumar ki father thi, he was a Congress defector, Babu Jagjivan Ram, but he did not invite, right? So यहाँ पर डिस्कशन है इनको कि किनको इनवाइट करना है, किनको नहीं इनवाइट करना है, फॉर द आइडिया, राइट? नाउ ऐसा ही काम एराइज हो सकता है गवर्नर के लिए भी। इफ व्हेन द नो पार्टी इज इन फुल मेजॉरिटी, राइट, इन द हाउस, देन राइट द गवर्नर में इनवाइट leader to take the oath of an affirmation to the office of the chief minister and basically prove the majority. Now in Maharashtra, what happened? Miracle. One governor has invited one leader at 4 to 5 o'clock in the morning to take the oath. सुना आपने, right? तो ये होता है, बट कुछ ही दिन के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया because he knew that I have no majority. तो वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन था गवर्नर का, राइट? ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल डिस्क्रिशन टू द प्रेसिडेंट और टू द गवर्नर। वहां पर हंग असेंबली हो जाएगी, वहां पर हंग पार्लियामेंट हो जाएगा। Got the idea, right? So that is situational discretion to the governor. Now लिखिए अब जरा इस बात को, लिखिए लाइक Parliament has to be dissolved. Now what happened in Neelam Sanjeeva Reddy case, right?
The Nilam Sanjeev Reddy asked the Charan Singh to dissolve the house. उन्होंने कहा कि आप इसको dissolve कर दीजिए, right? And house has dissolved, new election took place. ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि no party is able to basically make the make the government, then in such situation पहले तो होता है कि in case of state the governor recommend to the to the union government to impose the article 356, right, and give 6 month time for the horse trading. 6 महीने में हम मैं रूल करूंगा, 6 महीने में आप डिसाइड कर लो अगर सरकार बना पाओ तो. अगर 6 महीने बाद भी नहीं बनती है, right, then new election shall take place. Meanwhile interim government will be, कब क्या होता है कि sometimes dissolve the house, मान लो उस टाइम पे वार हो जाए तो पता है कि जो पुराना कैबिनेट है ना वो डिसॉल्व अपने आप, that is called informal cabinet, वो अपने आप फिर आ जाता है and take the all the charges, right? समझ में? तो डिसॉल्व हो जाएगा, आंसर है इसका. ठीक है, जरा लिखिए तो जरा इसको. देखिए, like the president, the governor has situational discretion of the following. यहां पर गवर्नर की बात हो रही, राइट? तो हम लोग गवर्नर के बारे में लिखेंगे. लिखिए, द गवर्नर कैन अपॉइंट चीफ मिनिस्टर. The governor can appoint chief minister when there is a hung assembly. The governor can appoint chief minister when there is a hung assembly. Hung assembly. Or chief minister dies suddenly. Or chief minister dies suddenly. Or chief minister dies suddenly and there is no successor. अच्छा, दो केस में हुआ है, मैं दो केस बताता हूँ. एक इंदिरा गांधी के टाइम पे, यू सी, राइट, इंदिरा गांधी died suddenly and immediately if you look at the president of India appointed Rajiv Gandhi as a prime minister. He was not a member of the house. Right? But since dynasty politics we have inherited, तो उनको उन्होंने बना दिया. और मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं. राजशेखर रेड्डी, right, died in crash. This was a sudden death. Now governor appointed another as a chief minister, right? और बाद में फिर डिसीजन लिया गया. ठीक है, और वही प्रॉब्लम हुआ कि उनका जो बेटा है जगन मोहन, उन्होंने अपना एक पार्टी, अपना दुकान फिर से खोल लिया. Each political party is दुकान. It's all type of, it's particularly dukaan. Dukaan means shop, MNCs. And we are consumer. Each voter is like a consumer. You have different choice. नहीं, each leader is an entrepreneur, isn't it? Each leader of a political party is an entrepreneur. वो क्या करता क्या है? वो आपको बताता है कि मेरा दुकान कितना बढ़िया है, मैं कितना बढ़िया काम करूंगा आपके लिए. जैसे दुकान में बोलता है, सर आइए, इसका सेलिंग फीचर्स ये देखिए, इसमें ये है. Similarly, political party does. And they do not belong to any party. हाँ. Then party. हाँ. Doesn't it negate the fact that CM is an elected representative? CM is a elected representative. Should be, or yours? Means the fact that CM is an elected representative exists, but when sudden demise of the CM leads to a successor who is not member of the party or this or that,
No, this is situational, as I told you that this is not a permanent office. The time comes, things will change. For example, look at in parliamentary democracy क्या होता है? We the people elect the leader, right? And then leader elect a leader among themselves. You know, this is the parliamentary how parliamentary system works. We elect the leader, and then leader elect leader among themselves, and that leader become the chief minister of the state, right? That is called the leader of the parliamentary, the leader of the state legislature. But idea, तो ऐसे काम होता है. बट ये डेथ हो गया तो किसी को बना दिया, फिर पार्टी अपने आप डिसाइड करेगी लीडर, एंड देन दे विल टेक द ऑफिस. It does not mean, the governor can appoint any person as a chief minister. No, right? He'll ask some leader and then will appoint. Okay? Otherwise, if the governor appoints any person as a chief minister, now he has to, face protest and cannot succeed, because that person cannot, prove the floor test, right? Majority. Got the idea? Now, next point to write situational discretion में. Okay, the governor can dismiss the council of ministers. The governor can dismiss the council of ministers when the chief minister has no confidence of the house. When the chief CM has no confidence of the house. So what do you write? Okay. The governor can dissolve the assembly if the council of ministers has lost majority. और यही पावर है प्रेसिडेंट के पास भी. ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में भी वही है. वहां पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लिखना है. प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की जगह पे, और गवर्नर प्रेसिडेंट गवर्नर की जगह पे, और चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की जगह. ठीक है, बस ये चेंज कर देना है, सेम होगा. नाउ लुक एट द स्पेशल डिस्क्रिशन. व्हाट इज a special discretion? Again, it is given by the constitution. Now look at the governor has certain special discretion given by the constitution. For example, the governor can set up a development board for Maratha, for Vidarbha and Maratha region in the Maharashtra. Then governor can establish separate development board for Saurashtra region in Gujarat. Okay. Then governor has also a special discretion regarding to the Manipur, like how to administer the hill state of the Manipur, the hill areas, जहाँ पर कुकी लोग हिल स्टेट में रहते हैं. जो कुकी और मैटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैंने जब बात किया था फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो आई टॉक्ड अबाउट इट. सो लुक एट द president, the governor has a special discretion. Now write third special discretion. A special discretion. Okay, the governor has a special discretion. The governor has a special discretion. The governor has a special discretion, and he does follow the direction of the president in this regard. And he does follow the direction of the president in this regard. And he does follow the direction of the president in this regard. The governor has following a special discretion. The governor has following a special discretion. Now, अब A, B, C, D करके लिखिए जरा.
The governor has a special discretion. First लिखिए, the governor can establish a separate development boards. The governor can establish a separate development board. The governor can establish a separate development board for Vidarbha and Marathwada. For Vidarbha and Marathwada in Maharashtra. In Maharashtra, अब स्टेट के नेम चेंज हो रहे, राइट? केरला का हो गया केरलम. अब ममता बनर्जी बोल रही है कि भाई तुमने वेस्ट बंगाल को बंगला करो, राइट? अब दूसरे स्टेट बोलेंगे कुछ अलग अलग नाम. इंद्रप्रस्थ, हाँ, पटना का पाटलिपुत्र है या पूरा बिहार का पाटलिपुत्र है? पटना का पाटलिपुत्र. नाम बदलना ठीक है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है. एनीवे, हैव यू रिटन इन महाराष्ट्र? लिखिए, एज वेल एज फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ. एज वेल एज फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ. As well as for Saurashtra and Kutch in Gujarat. In Gujarat. ठीक है, और भी है, इस इधर भी है, आंध्रा में भी है. देखिए, also for, या इसी में लिख दिए, also for Hyderabad and Karnataka region. Also for Hyderabad and Karnataka region. Karnataka region. क्या? A separate development board. यानी क्या बताया? The governor can set up a separate development board for, Saurashtra and Kutch in Gujarat, Marathwada and Vidarbha for Maharashtra, and ये जो रीजन है हैदराबाद कर्नाटका रीजन, उनके लिए भी सेपरेट बोर्ड कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट यू राइट that the governor can take decision. The governor can take decision with respect to law and order. The governor can take decision with respect to law and order. With respect to law and order in the state of Nagaland. In the state of Nagaland, if there is a threat to internal disturbances. If there is a threat to internal disturbances. ठीक है, देखिए, comma, in relation to the administration of hill areas. In relation to the administration of hill areas of Manipur. Of Manipur, yeah, comma, in relation to law and order. In relation to law and order in Arunachal Pradesh. In Arunachal Pradesh. Okay. Now next one, the last one. Okay. The governor
can take decision for peace. The governor can take decision for peace. The governor can take decision for the peace and ensuring social and economic advancement. For ensuring social and economic advancement of the different section of the society, social and economic advancement of the different section of the society in the state of Sikkim. In the state of Sikkim. अब सवाल ये है कि ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है, राइट, कैन प्रेसिडेंट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज विदाउट एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट? तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि जो पावर गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, दैट गवर्नर विल enjoy or exercise without aid and advice. Otherwise, governor has to follow the aid and advice given by the council of minister headed by the chief minister. And in this regard, there are two judgments. Recently, one judgment was held, that was Nabam Rabia case, and the court held that you cannot, for example, होता क्या है कि गवर्नर क्या करता है, हाउस को समन कर देगा अपने हिसाब से, हाउस को बोलेगा कि आ जाओ बैठ जाओ, या हाउस को मान लो कि अर्ली बोला कि अर्ली आप खत्म कर दो इसको, मीटिंग जो है. नाउ दैट कैन नॉट बी डन, राइट? दिस ऑल कैन बी डन ऑन द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. गॉट द आइडिया? सो थोड़ा सा एक सवाल लेके थे, कैन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर on his own? Can can governor exercise his discretion, can governor decide डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर विदाउट, किसी ने डिस्क्रिशनरी पावर लिख रखा था, डिस्क्रिशनरी पावर विदाउट एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विदाउट एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. क्वेश्चन मार्क दीजिए. अब इसमें लिखिए, द गवर्नर कैन एक्सरसाइज discretionary power on the basis of aid and advice given by the council of minister. The governor can exercise discretionary power on the ground of or on the basis of aid and advice given by the council of minister headed by chief minister. Right? Okay. Next point. In Shamsher Singh versus State of Rajasthan, the Supreme Court held that in Shamsher Singh versus State of Rajasthan, the Supreme Court held that the governor shall act
according to the aid and advice given by the Council of Ministers. The governor shall act according to the aid and advice given by the Council of Ministers, headed by Chief Minister. Headed by Chief Minister. Okay. Now, next point you write, like in Nabam Rebia case 2016, the Supreme Court in Nabam Rebia case 2016, the Supreme Court examined the governor's power, especially discretion in the state polity. The Supreme Court held that except constitutional discretion, the governor has to follow aid and advice. Given by the Council of Ministers. The governor has to follow aid and advice given by the Council of Ministers to exercise his discretionary power. So जो भी constitutional discretion है, that can be used by the governor on his own. Otherwise, he has to follow the aid and advice given by the Council of Ministers. The role of governor. एक topic बचा है, the role of governor in the state politics, right? As I told you that the role of governor is very contested in Indian politics. The role of governor in state politics. From 1952 to 1967, if you look at, there was no role of governor in the state politics. Why? Because center was ruled by the same party and state was ruled by the same party, and there was no conflict at all between center and state, right? But after 1967, if you look at, right, onwards, the governor has become very important, right, office to tame the elected government in the state, and central government has used it. Like, for example, look at the article 356, right, which has been imposed by the central government, right, on the advice given by the governor. Now let me tell you that if you look at, the central government has used article 356 indiscriminately against the opposition party. अब कांग्रेस ज्यादा रूल कर रही थी तो कांग्रेस के खिलाफ कौन था? जो भी पार्टी थे उनके खिलाफ आर्टिकल 356 यूज हो रहा था. अच्छा, पहली बार आर्टिकल 356 किसके खिलाफ यूज हुआ था? Any state that you name? Punjab. Second time, the case of Punjab was different, but case of the Bengal was Kerala. In 1957, if you look at, Kerala witnessed first elected communist government in the world, right?
but the central government has actually toppled them. And then thereafter, during not Nehru, but during Indira Gandhi, if you look at Article 356, is the most used, right? आप देखेंगे कि approximately 126 times Article 356 has been used against several states. उसमें से आधे से ज्यादा इंदिरा गांधी ने यूज किया था इस टाइम पे, राइट? शी फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. तो एक ये है, दूसरा आर्टिकल 356 को लेकर के है, दूसरा है आर्टिकल 200 को लेकर के. बड़ा बड़ा दिक्कत है आर्टिकल 200 को लेकर. इसमें है क्या, राइट? मैंने आपको बताया कि कोई अगर बिल पास होता है इसमें स्टेट असेंबली से, तो वो कहां जाता है? गवर्नर के पास. गवर्नर क्या कर सकता है, राइट? उसको साइन कर दे, या गवर्नर क्या करेगा? विथ होल्ड कर दे. थर्ड क्या बताया था? गवर्नर क्या करे? रिटर्न कर दे. बट रिटर्न करता है तो मनी बिल रिटर्न नहीं कर सकता, लाइक प्रेसिडेंट में. एंड व्हेन द हाउस अगेन passes the bill, right, then the governor is bound to sign. But we have seen even then governor has not signed on it. अभी जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु का गवर्नर, he was sitting on 23 bills, right? Kerala governor was sitting on approximately 10 to 15 bills, right? Then I told you that कि एक पॉकेट वीटो यूज करेगा, और पांचवा क्या है? वो प्रेसिडेंट के पास भेज देगा. इस केस में एक जजमेंट आया था मई में 2025 में. जजमेंट ये था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द गवर्नर शैल क्लियर द बिल, राइट, विद इन 90 days, यानी विद इन 3 months the governor must clear the bill. Either you return the bill, either you sign the bill or withhold the bill. जो भी करना है क्या करो, 90 days कर लो, राइट? ये जो पॉकेट वीटो लेके बैठ जाते हो तुम, पॉकेट वीटो ही तो है कि आपके पास आ गया, आपने कुछ नहीं किया, राइट? यू कैन नॉट डू इट. के बाद क्या हो? प्रेसिडेंट हैज आस्क्ड द सीरीज ऑफ क्वेश्चन. 14 क्वेश्चन इंडियन प्रेसिडेंट हैज आस्क्ड टू द कोर्ट कि भाई बताओ मेरा पावर. और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये भाई कहा था कि अगर ये बिल रिजर्व किया जाता है किसकी और भेजा जाता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट हैज टू क्लियर द बिल विद इन 30 days. द प्रेसिडेंट हैज क्लियर द बिल विद इन 30 days, राइट? अब प्रेसिडेंट ने भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन डाला उसके पास, जुडिशरी के पास, कि आप बताओ मेरा पावर और गवर्नर का पावर क्या है रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, दिस. Now, in November 2025, the court has given judgment in favor of the executive, but it also mentioned as soon as possible. But it mentioned as soon as possible. That was a victory for the state government. कि आपके पास अगर बिल आता है तो आप क्या करेंगे? इसको as soon as उसको क्लियर करेंगे. बट as soon as का क्या मतलब है? It's not clearly defined. 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 4 साल, कब तक, right? So governor role has been very contested in state politics in India. कहानी इतना ही है. Do you want to write now or will you write tomorrow? Tomorrow, it's all right. कल ही करेंगे, but I'll follow dictation. आकर के इसको लिखना जरूरी है, आर्टिकल 356 को, आर्टिकल 200 को, राइट? अब जब हम आर्टिकल 200 लिखते हैं तो 201 भी जोड़ लेते हैं. वाई जोड़ लेते हैं? क्योंकि गवर्नर सेंड दिस बिल टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हैज सर्टेन ऑप्शंस, राइट? वेदर क्लियर द बिल, राइट, और विथहोल्ड द बिल और रिटर्न द बिल. ठीक है? तो ये आर्टिकल 200 एंड 201 बोथ आर कनेक्टेड. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव इसी के साथ हो जाएगा, कल हो जाएगा. स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर तो 10 मिनट का काम है, 15 मिनट का. गॉट आइडिया? आज घर पे करना क्या है? घर पे करना है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट, व्हिच वी हैव एनलिस्टेड. जस्ट यू राइट इट. या द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, वीटो, डिस्क्रिशनरी. अगर कुछ कंफ्यूजन आता है तो आप सवाल रखेंगे, पूछेंगे, जरा इसको डिस्कस करना है.
अब बताओ. Yes. Are you part of any alliance? No. नया नया अलायंस बन रहा है. हाँ. Yeah, the judgment name is the government of state, the Tamil Nadu state versus Tamil Nadu government. हाँ. हम्म. right you are. हो रहा है. हाँ. गलत और सही क्या, देखो गलत क्या सही होते हैं पॉलिटिक्स में, क्या है कि यू हैव टू नेगोशिएट, राइट. As you see, federalism has strengthened in India in 1990s due to the rise of regional parties and the coalition government at the center. But whenever the one party get full majority in the parliament, then central government becomes very powerful. You know the zero sum game rule, पता है zero sum game rule power का? Don't know zero sum game rule? किसी को पता है पावर? मान लो कि A और B है. If there is a rise of power in A, ultimately that will be fall in power of the B. The A will lose at the cost of the B. Right? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लो B को स्टेट मान लेते हैं. So state government gained more in 1990s, right, and 2000s at the cost of the center. Right? Center का जो power था वो कम हुआ, not formally but informally, because the regional parties were playing very important role in the central government. ठीक है? Right. Now if you look at the 2014, the BJP gained power at the center. This was a one majority power. So इनके power में gain हुआ तो क्या होगा इधर? ये lose करेगा ना. तो कल भी आया था योगेंद्र यादव का आर्टिकल फेडरलिज्म के ऊपर, आपने पढ़ा उसको? आर्टिकल था ओपिनियन पेज में इंडियन एक्सप्रेस में, राइट. फेडरलिज्म का मतलब डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट, बट यही होता है. गलत तो है, मतलब गलत क्या है और सही क्या है पॉलिटिक्स में, एवरीथिंग इज कंटेस्टेड. नाउ लुक एट, as I told you that Tamil Nadu Chief Minister has constituted a new committee, high powered committee headed by Joseph Korean, right, in order to interrogate center state relation. ठीक है, तो थोड़ा सा है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बड़ा. गवर्नर का रोल भी फेडरलिज्म, अगर गवर्नर मान लो कि ये क्लॉज हटा दे, ये जो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्लॉज, फिर गवर्नर भी चौड़ा होके रहे. Look at the governor, right? They like psychopath. They completely psychopath of the union government. नहीं, ऐसे भी गवर्नर है जो जूता उठाने वाले हैं अब बड़े लीडर के, है ऐसा भी लीडर हुआ है इंडिया में. ठीक है, एनीवे, so let me finish here and then we'll see you tomorrow. कल आपको ये काम करके आना है, ये लिस्ट बना के आना है. If you find any problem, confusion, just raise the question.